So good evening, everyone. My name is Maurya Hanspal, and in this session, we're going to talk on valuations. We have been talking about the concept of valuations in endless number of sessions. Okay, so if you people are interested to know that how to value the company in detail, then go back and watch the sessions on valuations. Endless number of sessions have been done on the concept of valuation, starting from both the basic valuation to intermediate valuation. And nowadays, we are talking about advanced valuations and valuation models. Even we have also talked about how to value the loss making companies or the new startup businesses or the tech businesses as we are like witnessing right now in the form of IPOs. So all these valuations and new measures of valuations, both the qualitative as well as the quantitative measures of valuations have been discussed in the previous sessions. So if you hold interest in valuations, if you hold interest in investment banking, then go back after this session, of course, to watch the previous sessions on valuations. Okay. So in this session, we're going to talk about one approach of valuation, that is the asset-based approach. And we have four models within the asset-based approach. Okay. This is the asset-based approach of valuation. So that we're going to talk about in this session. What exactly is the asset-based valuation approach? This approach is also called your cost approach. Okay. Your asset-based valuation approach is also called your cost approach. And this approach is useful to value a company which has assets or a company which is heavy or the heavy industries. This method can be used to value your metal industry, your cement industry, your real estate industry, your not consumer goods, your capital goods industry. Okay. Because those industries are asset intensive industries or asset heavy industries. So this approach of valuation is quite beneficial for those industries. Okay. So when we talk about the asset based approach, I told you that one predetermined condition, that the industry should be an asset heavy industry. Okay. It should be an asset heavy industry. अब IT इंडस्ट्री में तुम यूज नहीं कर सकते इसको, क्यों? Though the company might have assets, but the asset would be too low because those industries are based more or less on intangibles or softwares, right? So this is mainly used for the asset heavy industries or the asset intensive industries. So the first model that we're going to talk about today in the asset based approach is, let me just delete all this, is the book value method, and it is the simplest method. Book value method. So what is the book value? See, book value we know. How do we calculate the book value, or the thing that we have, the book value or the carrying value? So it is basically the price at which you purchase the assets. Okay. So see, like when we purchase an asset, okay, so there is some depreciation upon it. And after the depreciation, we have the final amount. And the final value is the book value or the carrying value. The book value and the carrying value is the same. Okay. So this method is based on the historical cost concept. That is, all the assets and liabilities will be recorded in the balance sheet at the price that they were acquired for. Okay, and not the current market price. And that is where our accounting principles also work upon the historical concept, and we also call it as a cost concept. Okay, so that is nothing but your like book value method in valuation. And this method is useful, like for example, when you are trying to value your own company, like which is again an asset intensive company, or you are trying to, like for example, if one company is trying to buying some another company, in the case of acquisitions or mergers or joint ventures, anything, okay, like whatsoever is happening here, even the takeover as well. So the price at which they would be buying the company or the price at which they would be valuing the company would be on the basis of their book value or on the historical method. मान लो अगर मशीनरी उन्होंने like 2 लाख पे खरीदी,
ठीक है, या मान के चलो कि 2 लाख अभी की वैल्यू है मशीनरी की, तो दे वुड बी बाइंग दी मशीनरी एट 2 लाख रुपीज ओनली, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज्यादा, एट 2 लाख रुपीज। इफ द टोटल लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी दैट आर ड्यू टू आउटसाइडर्स, बैंक को देना है, थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी जिसको भी देना है, आर टोटल 10 लाख रुपीज, so they would be assuming that liabilities or absorbing that liabilities at 10 lakh value। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं कंपनीज की, एंड ऑब्वियसली द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स दे कीप ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, तो ऑब्वियसली लाइक देयर कैन बी सम चेंज इन द करंट मार्केट वैल्यू, राइट। हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख की 6 लाख बन चुकी है, ये भी हो सकता है वो 5,50,000 हो गई, और ये भी हो सकता है वो 4 लाख हो गई हो, या इवन वो जीरो भी हो गई हो, बिकॉज द मार्केट कैन राइज एंड फॉल एंड अकॉर्डिंगली दीज इन्वेस्टमेंट्स विल गिव रिटर्न और गो इनटू लॉसेस। बट 5 लाख पर ही हम रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज 5 लाख पे वी एक्वायर्ड द, बिकॉज 5 लाख पे वी आर वर्किंग ऑन द बुक वैल्यू मेथड। सो ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स विल बी एक्वायर्ड एट 5 लाख ओनली, चाहे उनकी मार्केट वैल्यू अब जीरो हो गई हो, चाहे वो 6 लाख हो गई हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं, बिकॉज देखो अगर मार्केट वैल्यू अगर 6 लाख की है एंड हम 5 लाख पे इन्वेस्टमेंट्स खरीद रहे हैं, इट इज बेनिफिशियल फॉर अस, राइट, बिकॉज स्टिल हम सस्ते में खरीद रहे हैं। बट अगर 4 लाख की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है या फिर जीरो की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है वैल्यू, तो हम उसे 5 लाख पे क्यों खरीदें? इन दैट केस द कंपनी इज स्पेंडिंग एक्स्ट्रा 5 लाख और एक्स्ट्रा 1 लाख इन दिस केस, अगर वैल्यू उसके लाइक 4 लाख हो गई है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है कंपनी को, लाइक व्हेन दे यूज द बुक वैल्यू मेथड। इधर मान लो कि प्रॉफिट होगा तो बहुत ज्यादा होगा कि 6 लाख की इन्वेस्टमेंट हमें मान लो कि 5 लाख पे खरीदनी पड़ रही है, बट अगर जीरो हो गई स्टिल 5 लाख पे खरीदनी पड़ेगी, so that tends to be a drawback of the book value method। Again same happens in case of assets also। अगर एसेट की वैल्यू नीचे घट गई है, वो 20 लाख की, अगर मान लो कि 2 लाख की एसेट की वैल्यू है, ठीक है, और अब उसकी मान लो कि वैल्यू इस साल, ठीक है, लाइक 1 लाख हो गई है, ठीक है, बिकॉज डेप्रिसिएशन वुड बी चार्ज ऑन दिस करंट ईयर एंड दैट वुड बी पोर्ट्रेट ऑन द नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। अगर मैं 2022 में किसी कंपनी को खरीदना चाहता हूँ, तो I would be purchasing that company on the basis of 2020 के financials, because I'll have the annual report and financials of 2020 का basis, and वो 1 लाख का मान लो कि जो depreciation charge हुई है and final value जो 1 लाख हुई है वो 2022 में हो रही है, ठीक है। तो मेरे पास ये मान लो कि फाइनल फिगर नहीं होगी अवेलेबल, and if I want this 1 lakh instead of 2 lakh, I'll have to purchase that company in 2023, ठीक है। तो मुझे वो 2 लाख पर ही खरीदना पड़ेगा, चाहे वो डेप्रीसिएशन कितनी भी लग रही हो, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द बुक वैल्यू। सिमिलरली अगर 10 लाख की लाइबिलिटीज हैं एंड विद इन दिस सेम ईयर, बिकॉज 10 लाख लाइबिलिटीज आर द प्रीवियस ईयर की, बिकॉज 2020 की बैलेंस शीट पे है, अगर बीच में कुछ पे ऑफ कर दिया है एंड लाइबिलिटीज बस 8 लाख रह गई हैं, स्टिल मुझे वो 10 लाख की लाइबिलिटीज को खरीदना पड़ेगा, बिकॉज अभी का मैं कंसिडर नहीं कर रहा, आई एम कंसिडरिंग जस्ट द हिस्टोरिकल बुक वैल्यू। सो इसमें कंपनीज को लाइक खरीदने बेचने में बहुत लॉसेस हो जाते थे एंड प्रॉफिट भी होता था लाइक कभी कभी, ठीक है, बट लॉसेस का भी सिनारियो ज्यादा रहता था। द इंटेंसिटी ऑफ लॉसेस वाज फार मोर देन द चांस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सो व्हाट डिड दे डू, दे केम अप विद न्यू मेथड। वे न्यू मेथड पे आए, तो स्टिल कंपनीज यूज द बुक वैल्यू मेथड, आजकल चलता है, but an advanced version or an improved version of the book value method, that was the adjusted book value method। Adjusted book value method। अब adjusted book value method को भी also called as a market value method, यानी मार्केट मल्टीपल नहीं है, ठीक है, it is a market value method and I'm not talking about the method of relative valuation, okay, relative valuation जो हम करते थे। अब मार्केट वैल्यू मेथड में क्या है, जो भी बुक वैल्यू के प्राइस में अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस, if there had been certain adjustments, okay, so then we would be doing it on the basis of market value। मान लो if in this case the investment that the company made was 5 lakh rupees and this is the target company A। Target company means the company which we are acquiring। Now the value has become 6 lakhs, so on 6 lakhs like we would be acquiring that company। मार्केट वैल्यू मान लो होगी 4 लाख, तो हम 4 लाख पे खरीदेंगे, अगर जीरो है
तो हम एक पैसा नहीं देंगे. सेम गोज फॉर एसेट्स. एसेट्स की वैल्यू अगर 2 लाख है एंड डेप्रिसिएशन ऑलरेडी 1 लाख का चार्ज हो चुका है, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग इट ऑन द लास्ट ईयर वैल्यू ऑफ 2 लाख, विल बाइंग इट एट 1 लाख. ओके. Similarly, when we talk about the liabilities, अगर 10 लाख की liabilities जब 8 लाख होगी, then we will assume just 8 lakh की liabilities and not 10 lakh की liabilities. And this would be adjusted on a continuous basis. Continuous basis पे होगा adjust and market value पे हम company को खरीदेंगे, not on the basis of book value. Okay. So this method has been an improvement over the traditional book value method. ठीक है, बिकॉज बुक वैल्यू वाला जो मेथड है कि एज आई टॉक्ड अबाउट, उसमें बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. अगर प्रॉफिट होना है तो प्रॉफिट होगा, बट लॉसेस के भी चांसेस बहुत रहते हैं. सो इट इज बेटर टू परचेज द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट वैल्यू मेथड. सो लाइक दिस मेथड इट टेंड्स टू बी अ फेयर वन, कि मार्केट का जो रेट चल रहा है तुमने उसी के बेसिस पे कंपनी को खरीदा. सो दैट वाज द सेकंड मेथड. द फर्स्ट मेथड वाज द बुक वैल्यू मेथड. We also call that method as the historical cost method. And the second method is an improvement over that method, which is the adjusted book value method. Okay. The next method, we have like 4 methods. Third method हम बात करेंगे, और third method is your liquidation method. See, like when we talk about valuation, your valuation works on 2 principles. One is the going concern and the second is the liquidation. So if anyone in this entire world asks you that the 2 premises or the 2 assumptions of valuation, so tell me that. So those 2 assumptions are the going concern and the liquidation. So when we talk about going concern, so going concern is basically like when we talk purely in terms of accounting, that the business shall continue for a foreseeable future and there is no intention to close down its operations. मतलब बिजनेस चलता ही रहेगा एंड बिजनेस खत्म नहीं होने वाला. सो दैट इज अ गोइंग कंसर्न बिजनेस principle. And when we talk in terms of liquidation, so liquidation is something like when we are selling the business, so what would be the value of that company? So that is the purpose of liquidation. कि कंपनी को जब हम बेच रहे हैं तो कंपनी की क्या वैल्यू होगी. लाइक कंप्लीटली अपोजिंग कॉन्सेप्ट्स और कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट्स. तुम एक जगह बोल रहे हो कि कंपनी लाइक हमेशा चलेगी एंड एक जगह कंपनी बंद हो रही है. ओके. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट लाइक सर्टेन वैल्यूएशन इज मेड. अगर उनको लगा है कि कंपनी खत्म हो जाएगी तो मे बी द वैल्यूएशन माइट नॉट बी एट अ प्रीमियम. Okay, the valuation might be at a discounted price, because in that way there is some pessimism in the market, company खत्म होने वाली है. Whereas अगर मान लो कि going concern है तो the company might be valued at a premium because the company has a future. तो liquidation का मतलब क्या है कि मान लो कि अगर कंपनी खत्म हो रही है and you are like exiting from the company, तो कंपनी की क्या वैल्यू होनी चाहिए. And now like you'll be selling the assets of the company. ठीक है, तुम लाइबिलिटीज को पे ऑफ करोगे, देन फिर सब इन्वेस्टमेंट्स होंगी, इन्वेस्टमेंट्स को बेचोगे, तो ये सब बेच के कंपनी को कितना पैसा आएगा. ओके. एंड ऑल दीज में हम मार्केट वैल्यू को लाइक वी डू नॉट एज्यूम मार्केट वैल्यू. जो बैलेंस शीट पे जो वैल्यू है उस पे जो बेच रहे हो, ठीक है, सो दैट वी टेक इनटू कंसिडरेशन लिक्विडेशन. बिकॉज मार्केट वैल्यू पे कोई आइडियली कोई लेना नहीं चाहेगा, बिकॉज इफ द कंपनी इज गोइंग इनटू लॉसेस एंड कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अगर 6 लाख चल रही है एंड बुक वैल्यू 5 लाख है, ठीक है, तो व्हाई वुड द कंपनी बाय एट 6 लाख. वो 5 लाख पे ही खरीदेगी बिकॉज द कंपनी हैज नो फ्यूचर. तो इन इन्वेस्टमेंट्स का भी क्या होगा. एंड व्हाई टू टेक रिस्क. इट्स नॉट अ क्रेडिट रिस्क फंड, इट्स नॉट एंड like मतलब क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ नॉन परफॉर्मिंग लोन फंड और एनपीएल फंड. ठीक है, तो वो तुम्हारा नहीं है ये सब. ठीक है, कि लाइक हम रिस्क ले रहे हैं. सो इन आइडियल सिनारियो व्हाट हैपेंस इन लिक्विडेशन, हिस्टोरिकल जो भी तुम्हारी बुक वैल्यूज हैं उस पर जब तुम बेचोगे तो कंपनी को कितना पैसा मिलेगा. सो दैट इज अ लिक्विडेशन मेथड. ठीक है. अब लास्ट मेथड वी टॉक अबाउट, the last method that we talk about is your replacement method. And this takes into consideration your market value. And your replacement method is nothing but अगर कंपनी के पास कुछ एसेट्स हैं, कुछ हैं, so at what price it would be replaced by taking into consideration the market value. Okay, like for example, if the company is having a machinery of 2 lakh rupees,
Okay, so what is the current market value of that machinery? And on the basis of that current market value, the value of this machinery would be assigned. अगर 2 लाख की मशीनरी है और अगर उस सेम मशीनरी की मार्केट वैल्यू चल रही है 1 लाख रुपए या 1,50,000 rupees, so that would be replaced on like 1,50,000 rupees. So your replacement cost will come out to be like 50,000 rupees. अगर 1,50,000 पे तुम एक्सचेंज कर रहे हो एंड सेम मशीनरी तो मार्केट में तुम 2 लाख की खरीद रहे हो, ठीक है, तो वो सेम मशीन तुमको लाइक 1,50,000 पर मिल जाएगी, ठीक है. अगेन अगर तो बेसिकली इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द मार्केट, कि मार्केट के बेस पे तुम कंपनी की वैल्यू कैसे लगाओगे, दैट इज द रिप्लेसमेंट मेथड. So when we talk about this asset-based approach or cost-based approach, there are 4 methods. One is the book value, then you have the adjusted book value, then you have the liquidation, and then you have the replacement. Talking particularly about the book value method and liquidation method, they're based on historical concepts. But the replacement method and the adjusted book value method, these are based on the market concepts. Okay, that was all for today, and I'll see you in the next session.